Any female of age, including any child who claims to be the survivor of sexual assault, should always be treated as possible the victim. She must be treated as priority case by all staff and doctor. Although life-threatening cases may be given priority over a rape survivor, he is not in immediate danger. Survivors should have seen within all health facilities such as clinic, nursing home, hospital, or doctor should not refuse to examine a rape survivor on the ground if she was not brought by the police or she by his own says this medical examination victim of rape. The examination should be conducted without delay by a registered medical practitioner employed in a government hospital or any other RNP with the consent of survivor or a person competent to give consent on her behalf, and she should be sent to the registered medical practitioner within 24 hours with consent of survivor or person competent to give consent on her behalf, and she should be sent to registered medical practitioner within 24 hours from the time of receiving the information related to the commission of such offense. Senior medical staff, if possible, senior medical staff, if possible, should examine the sexual assault case under medical examination of victim of rape. The examination should be conducted without delay by a registered medical practitioner, employee of the government hospital, or any other registered medical consent of the survivor of the person coming to give her consent on their behalf. Parents, guardian can request medical examination and treatment on the behalf of rape, rape sexual abuse victim under 12 years, mentally retarded, under 12 years, mentally retarded, under the influence of alcohol, unconscious, under 12 years, mentally retarded, um, under the influence of alcohol or unconsciousness, mentally retarded, and under the influence of alcohol. So the survivor should at all times be treated with dignity and respect by the medical staff. ये priority देनी चाहिए लोग otherwise also environment 24 times they survivor should at all time be treated with dignity and respect by the medical staff. The the examiner must be reassured and empathetic. Survivor should have all times be treated with dignity. The examiner must be reassuring, empathetic, and non-judgmental, and should not rush the patient. Patient को rush नहीं करना है, non-judgmental रहना है, empathetic and reassuring. Privacy should be ensured, like by allowing her to be brought into the examination room through a separate entrance.
प्राइवेसी उसकी वो करनी है, प्राइवेसी शुड बी इंश्योर्ड, लाइक अलाउ हर टू ब्रॉट into examination room through a separate room. The history taking and examination should be carried out in privately and specific room, मतलब अलग से उसकी हिस्ट्री लेनी है उसको, अलग उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है किसी वजह। Forensic evidence should be collected as soon as possible during the process of examination. However, the serious injuries of victim important than forensic need. Describe the material taken from the person of the DNA profiling. A registered medical practitioner should give a professional opinion based on the basis of the history and finding of clinical examination. History and clinical examination handed over to report without dealing the investigating officer and shall forward it to magistrate. Even if the sexual assault occurs outside the jurisdiction of hospital, the salary must first be examined and treated before refusing her to the hospital in appropriate area. Examination of sexual assault survivor duties, examination. Doctors are legally bound to examine and provide treatment to the survivor of sexual assault. The timely reporting, documentation, and collection of forensic evidence may assist the investigation of the crime. The Ministry of Health and Family Welfare has issued an uniform protocol and guidance for medical practitioners that highlight the medical and forensic responsibility, including collecting relevant evidence so that the culprit should be brought to books. The guidance describe the initial resuscitation, first aid, initial resuscitation, initial succession, first aid, establish a report with the survival and uniform consent, detailed history taking, fourth medical examination, general physical and local medical examination, general physical and local ये है अपना फर्स्ट एड देना, सबसे पहले फर्स्ट एड देना, देन उसको initial resuscitation and first aid, establish a record with the survivor and uniform consent, detailed history taking, first aid देना है, फिर रिपोर्ट बनाना है उसके साथ, रिपोर्ट विद सर्वाइवर टू इन्फॉर्म कंसेंट, देन उससे कंसेंट भी लेना है, देन थर्ड नंबर पे हिस्ट्री टेकिंग, फिर हिस्ट्री लेंगे, पहले फर्स्ट एड देंगे, फिर कंसेंट लेंगे एंड रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद हिस्ट्री लेंगे, डिटेल हिस्ट्री, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन जनरल, फिर मेडिकल एग्जाम लेंगे जिसमें कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन देन लोकल, फिर फिफ्थ नंबर में एज एस्टिमेशन करेंगे बायोफिजिकल, डेंटली रेडियोलॉजिकली एंड फिजिकली देखकर डेंटेशन से और रेडियोलॉजिकल इफ रिक्वेस्टेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, अगर एजेंसी के द्वारा बोला गया तो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ट्रीट करेंगे, इंजरीज से एविडेंस कलेक्ट करेंगे, पैकिंग, सीलिंग एंड हैंडिंग ओवर कलेक्टेड एविडेंस टू द पुलिस, पैक करेंगे, सील करेंगे, हैंडेड ओवर द कलेक्टेड एविडेंस टू द पुलिस एंड पुलिस को वो एविडेंस दे देंगे। क्या कहते हैं टेस्टिंग, टेस्टिंग प्रोफाइलैक्सिस फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एचआईवी हेपेटाइटिस बी और प्रेगनेंसी के लिए चेक करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग, सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर, देन चेक करेंगे एबीसी एंड फर्स्ट एड देंगे, एबीसी फर्स्ट एड, कंसेंट फॉर एग्जामिनेशन, एविडेंस कलेक्शन एंड पुलिस इंफॉर्मेशन, फिर अपन उससे कंसेंट लेंगे एग्जामिनेशन के लिए, एविडेंस कलेक्शन करेंगे एंड पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, देन हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में पहले हम एज एस्टिमेशन करेंगे अगर बोला है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लोकल एग्जामिनेशन करेंगे और एविडेंस कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन और एविडेंस कलेक्ट करेंगे। ये हो गया, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी एविडेंस लिया है उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और उसको सील पैक करके पैकिंग सील करके
रिपोर्ट कर देंगे हैंड ओवर पुलिस को। उसके बाद जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो अपन उसको डिस्चार्ज कर देंगे और फ़ॉलो-अप के लिए बुलाएँगे। फिर जो सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवल है, सबसे पहले हम उसका एयरवे, सर्कुलेशन और ब्रीथिंग चेक करेंगे। उसके बाद फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड के बाद फिर हम उसका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन लोकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे और एविडेंस कलेक्ट करेंगे। उसमें एज एस्टिमेशन भी आ जाएगा। उसके बाद होने के बाद फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होने के बाद हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे। एविडेंस का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसको सील पैक करेंगे और ट्रीटमेंट कर देंगे। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं सील पैक वाले वो अपन पुलिस को दे देंगे। और फिर ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज और फ़ॉलो अप करेंगे। डिस्चार्ज करेंगे। द पर्पस इज़ establish a uniform method of examination and evidence collection followed by the protocol using the safe kit का यूज़ करेंगे। एविडेंस कलेक्शन के लिए सेक्सुअल असॉल्ट फोरेंसिक एग्जामिनेशन किट एविडेंस किट सर्च फॉर फिजिकल साइन दैट विल कोलैबोरेट द हिस्ट्री। इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए चेक करेंगे जो कि हिस्ट्री से कोलैबोरेट करे। सर्च फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल ट्रेस एविडेंस लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ट्रीट द विक्टिम फॉर इंटू दीस टू प्रिवेंट treat venereal disease of pregnancy and to prevent all elevates psychological damage, maintain a clear and foolproof chain of custody of medical evidence collection. This will help in informing and this will help informing an opinion on whether a sexual act has been attempted or completed। अटेम्प्ट हुआ या कंप्लीट हो गया, वेदर सच सेक्सुअल एक्ट इज रिसेंट, अगर वो रिसेंट है या कुछ समय पहले का है या फिर उसको कुछ हार्म हुआ है सर्वाइवर को। एज ऑफ द सर्वाइवर वेरीफाई हो जाएगी और वेदर अल्कोहल और जो ड्रग है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन किया कि नहीं। सेफ किट sexual assault forensic examination kit is a set of items used by medical personnel for gathering and preserving physical evidence followed by an allegation of the sexual assault। It is called physical evidence recovery kit। पर्क भी बोलते हैं पीईआई के और सेफ भी बोलते हैं। पर्क इज फिजिकल एविडेंस रिकवरी किट। फिजिकल एविडेंस रिकवरी किट फिजिकल एविडेंस रिकवरी किट फिजिकल एविडेंस रिकवरी किट sexual assault forensic evidence safe kit। It is a set of item used by medical practitioner for gathering and preserving physical evidence followed by an allegation of the sexual assault। It is also called physical evidence recovery kit, sexual assault recovery kit, physical evidence recovery kit। उसके बाद सेक्शन इसके अंदर होता है डिटेल इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। इंस्ट्रक्शन होते हैं, फॉर्म्स दिए रहते हैं, कैचमेंट पेपर होता है, नील कटर, कॉम्ब और सीजर होता है, ग्लास स्लाइड्स होती है, सीलिंग वैक्स होती है, लेबल्स होते हैं, वो डिस्टिंक्ट फॉर फिंगर नेल वुडन स्टिक होती है फॉर फिंगर नेल स्क्रैपिंग। कॉटन स्वाब होता है, बायोलॉजिकल एविडेंस होता है, कॉटन स्वाब होता है फॉर बायोलॉजिकल एविडेंस कलेक्शन। क्लीन क्लॉथिंग एंड शावर हाइजीन आइटम, क्लीन क्लोथिंग होती है, शावर होता है, हाइजीन होता है आइटम। और सर्वाइवर्स यूज फॉर एग्जामिनेशन। ग्लास शीट ऑफ पेपर फॉर पेशेंट टू अनड्रेस ओवर। क्लोथिंग होती है, शावर हाइजीन प्रोडक्ट होते हैं, पेपर बैग फॉर क्लोथिंग होती है, डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं, पेपर बैग्स होते हैं, स्टेरलाइट एंड डिस्टिल्ड वाटर होता है, यूरिन सैंपल कंटेनर होता है, अनवैक्स्ड डेंटल फ्लॉस होते हैं, ट्यूब्स, वैक्यूटेनर्स फॉर ब्लड एग्जामिनेशन, डीटीए प्लान, एनएएफ सीरेंज एंड निडल फॉर ड्राइंग ब्लड। सीरेंज निडल होते हैं, ईडीटीए प्लेन और सोडियम फ्लोराइड। सैंपल कलेक्शन के लिए ट्यूब्स होते हैं, एनवेलप ऑफ द बॉक्स। तो क्या-क्या होता है? सबसे पहले किट होता है, किट में इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन के बाद डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद नील कटर, सीज़र और कोम्ब होती है, फिर कैचमेंट पेपर होता है, फिर वुडन स्क्रैपर होता है, उसके बाद कैचमेंट पेपर के बाद एक लास्ट शीट होती है, फिर विक्टिम के लिए कपड़े होते हैं और सैनिटेशन का सामान होता है, फिर सिरिंज होती है, वैक्यूटेनर्स होते हैं, स्टेराइल निडल होती है एंड स्टेराइल वाटर होता है। क्या होता है?
और ईडीटीए, सोडियम फ्लोराइड, इसके वो होते हैं वैक्यूम्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं, पेपर बैग होता है, एनवेलप और बॉक्स होता है, इंक्लूडिंग एविडेंस एविडेंस का सैंपल होता है, बॉक्स होता है। ठीक है। Examination procedure. A request from the examination of the survivor should be come from the authorities person, either a magistrate or in charge of the police station. If she has approached the doctor herself to a medical examination, doctor is bound to conduct a medical legal examination without any delay. A person requisition is a a person requisition is not request for this information is sent to the police for recording her statement and logging her complaint. Informed consent the survivor has been examined should be informed about the nature and purpose of the examination. Only in life-threatening situation the doctor may initiate a treatment without consent. The consent form should be signed by the survivor if she is more than 12 years of age, and guardian and parents if she is less than 12. In case of person with a mental disability, their informed consent a center should be slot open after providing the necessary information and educate assistant the friend colleague caregiver to take the decision. Consent should be obtained before the examination, collection of a specimen, release of information, authority taking photographs, sign survival witness. The survivor should be identified by the escorting police constable, whose name and number should be recorded, relative and attendance accompanying her. If possible, the survivor is examined by or under the supervision of female doctor. If a board of doctor is examining her, at least one doctor must be female. Otherwise, a female nurse attendant should be there. If she is attending by a male doctor, the examination should be carried without delay. Minor degree of injury may fade rapidly, or swelling and tendency of the vulva may disappear in few hours. Chance of detection of spermatozoa from the genital tract diminish with delay. Statement of survivor and other accompanying her are recorded separately. This is particularly important in case of children, where she may accompanied by the abuser in case female person appointed by the head. The inadvertent discovery during the history of examination that the person is transgender intersex should be treated with ridiculous surprise, should not be treated with ridicule, surprise, or shock. There should be no judgment on the person's sexual orientation in general or case of assault. In case of transgender intersex, the survivor should be giving a choice of whether she wanted to be examined female or male. Transgender male individual who still have ovaries and uterus or examination, physical examination. Before beginning the examination, she asked for survivor permission when feasible, orientation of time, space, pulse, blood pressure, respiration, temperature, state of the pulse are noted. Orientation in the time, space, pulse, blood pressure, respiration, temperature, and statement of pupil are noted. General stature, weight for child and nutrition, anxious, fearful, happy, withdrawal is noted. Any sign of intoxication or injection of drug alcohol are noted. Oral cavity should also be examined for an evidence of bleeding, discharge, tear, edema, or tenderness. Clothes should be ascertained whether the clothes are those which are worn at the time of attack. Change the survivor in the presence of doctor.
she remove each item of her cloth herself. She should be standing on a clean paper, and anything falling mud, button, hair, fiber should be preserved. Clothing should be examined. Clothes should be examined for stain, blood, semen, sand, grass, soil, tears, and loss of button type of damage. It should be air dried at the room temperature and stored in a clean paper bag and sent to the laboratory. Clothes are very important in collaborating and contradicting her story. If the offense has been committed outside a collaboration, can sometimes be obtained to find the leaf, grass, murder, and burn block or the back. Breast sexual maturation describe a tanning stage 1 to 5 puberty noted. Examination with wood lamp, UV examination wood lamp may detect semen or the foreign debris in the skin. Dried semen. Sexual assault may result from following extragenitalia. Sexual assault may result from an extragenitalia injury, genital injury, face psychological symptoms, sexual transmitted disease, and pregnancy. uh, Frequency site for extragenital trauma, including breast extremities, neck, buttock, and oropharyngeal, breast extremities, breast extremities, neck, buttock, oropharyngeal, and represent residual features to use of force and restraint ligature mark over breast and ankle and traction of alopecia. The survivor's entire body must be through the examiner, soft tenderness, swelling, the back of the head. The back of the head may be banged against the ground, swept, soft tissue swelling, lacration हो सकता है, soft tissue swelling हो सकती है, facial injury include the fracture of the mandible, nose, broken tooth, with the survival float, pedestrian hemorrhage line, or for violence, especially contusion and abrasion, particularly fingernail abrasion around the finger and thighs and knees, forcing the thigh part apart on the back from pressure on the gravel or harder ground of surface on the breast because of the manual squeezing, manipulation, true bite marks and love bites rupture result from the ruptures of a small vessel found in the breast, neck, chest, lower abdominal, thigh part, sign and injury specific. Yeah, back of the head, scalp, eye, scalp, buccal mucosa, teeth, abrasion, bruise, my uh, injury के लिए defense injury, broken nails, abrasion, bruise, operation, bruise, nail splitting, local genitals, the right genitals, the survival laid in the lithotomy position on examination table is good light with the parts fully exposed. The examination of genitalia is done using a specimen of the glass globe. Stain the presence or absence of the blood stain about the leg should be looked and preserved. Stain the around the vagina and leg. Pubic hair. The pubic hair should be examined for coordinating from the seminal fluid or the blood and foreign hairs. If hairs are related together, a portion must be cut off and kept in the examination. Partners processing period should be found with loose, collecting loose foreign hairs and comprises sample to cut the plugged hair.
15 to 20 preserve a catchment paper, collected the injury stain and became injury accurate finding of the injury, whether the generator or the anal area, including abrasion, bruise, edema, lacration, tear, ecchymosis, abrasion, redness, swellings. In case of sexual attack, the survival vagina is not lubricated. Due to the physical conflict with the upward position and insertion of the penis into the vagina is usually accessible, which result in the further high vagina and perineum. The vulva is inspected systematically for any signs of the bleeding, tear of discharge, injury, abrasion, chymosis, having the bleeding, tears, discharge, infection, bleeding, tear, discharge, infection, arrhythmia, irritation, and occasionally abrasion on their genital region. Therefore, any superficial injury found in the area must be carefully. Therefore, any superficial injury found in the area must be carefully. Than labia, fingernail scratching, scraping will present particular area minor swelling, tenderness हो सकती है, swelling हो सकती है. I from also I आई में aberration यूज हो सकते हैं. लेविया लेविया में अपना रेडनेस, ब्रूज, swelling, scratching, redness, bruise, swelling, scratching, redness, bruise, swelling और scratching हो सकता है. वेस्टिब्यूल में नॉर्मल गैपिंग हो सकती है. वेस्टिब्यूल में नॉर्मल या गैपिंग हो सकती है. नॉर्मल फ्लैश गैपिंग हो सकती है. हाइमन होता है इंटैक्ट या टॉन हो सकता है. हाइमन इंटैक्ट या टॉन हो सकता है. फोरशेड इंटैक्ट लैसेरेटेड फोरशेड. फोर सी एच फोर इंटैक्ट या लैसेरेटेड हो सकता है. पोस्टीरियर कमिशर भी इंटैक्ट या रप्चर हो सकता है. पेरी पेरिनियम इंटैक्ट या लैक्सेटेड हो सकता है. और ओरल एनल ऑरिफिस जो हो सकता है वो इंटैक्ट या लैक्सेटेड हो सकता है. कॉमन इंजरी इस वाले पोर्शन, ये कॉमन इंजरी का पोर्शन है. प्यूबिक हेयर, मैटेड, नॉन मैटेड, सेमाइनल seminal stain, blood stain, foreign particle discharge, urethral, vaginal, and menstrual swab, high and low. Laceration में अगर dafn को in the question था. 5 to 7 o'clock position. Oh, yeah. So, 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 mm, to 12 3 and 6 and 9 है. तो 5 to 7 position पे होता सकता है. The seminar often rupture from the both side and alignment near the close. 3 to 4 days activities on congested 3 to 4 days तक.
क्या बोल रहे थे, even when the examination after 3 to 4 the edge are swollen और congested 3 to 4 days के बाद भी जो edge होते हैं congested और small होते हैं sign of recent dragging tear, lack of epithelial healing, edema, hemorrhages, and then there's also cycling, posterior commissural rupture, orchard, fragile, often delayed, goes, टॉलीड्यून टॉलीड्यून को यूज करते हैं टॉलीड्यून को specimen to laboratory specimen collected is a 96 likelihood to find evidence 72 hours के अंदर 3 days के अंदर and collected 96 के अंदर भी कर सकते हैं पर 3 दिन के अंदर टेस्ट एविडेंस होते हैं क्लोथ कलेक्ट करते हैं पीस ऑफ द पैक ईच पीस क्लोथ अलग अलग सेपरेट पे बैग में रखना है फिर स्वाब लेने हैं ब्लड स्ट्रेन बॉडी फॉरेन मटेरियल बॉडी सरफेस के लिए लेना है बॉडी फॉर फॉरेन मटेरियल बॉडी का फॉरेन मटेरियल का बॉडी सरफेस का सेमाइनल स्ट्रेन का बॉडी सरफेस अदर हेयर detection of the scalp detection of the scalp detection of the scalp detection of the scalp hair and pubic hair detection of the scalp hair pubic hair scalp survivor's body has evidently value all hair being collected in catchment paper में रखना है with the folded and sealed in means scraping scraping means clipping and scraping are taken from both hand and packed separately nail scraping and this in case of struggle the accused and survivor may have scratched each other meanwhile and that's routine blood grouping drug or drug administration meanwhile or vaccinator blood grouping or drug administration sodium fluoride alcohol estimation and EDTA or DNA analysis EDTA sodium fluoride alcohol estimation sodium fluoride alcohol estimation or EDTA or EDTA DNA analysis की urine sample collected 72 hours उसको पहले और vagina analysis analysis
Intersection proposed by a man with a woman who is closely related to him by blood or by the marriage prohibition, degree of relationship, daughter, granddaughter, sister, stepsister, and between the father and daughter is electro complex, father with a, between father and daughter, electro complex between mother and son, Oedipus complex, and between brother and sister, uh, Pharaoh incest between father and electro complex between mother, Oedipus complex, and Pharaoh incest between the circumstances from the family shift and disagreement towards the economic behavior over time, lack of time, lack of negative reasons. Sexual definition, intimate, performance, examination, physically, musically, important, and physically, was. It's kind of a very important like a